Hi all, welcome to Anjanaya Academy, Learning German with Ritu. And in lesson number 10, 11, and 12, we did the regular verb conjugation and we were able to learn close to 30 regular verbs, right? So now we are going to start with irregular verb conjugations. I know many of us are very confused when to put a umlaut, when to write I, why this is changing. Very difficult to learn also. Right, but I will teach you in a simpler way so that you can learn systematically and fast. Okay. So I've tried to give you some tips how to learn it. So let's start. Do stay with me in the whole video if you want to understand and learn the irregular verbs nicely, which you will remember until B2. जिस जिसको B2 करना है, B1 करना है, those who want to learn the verbs nicely, irregular verbs में problem है, please stay with me, watch the whole video, then only you can understand. तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. If you will leave in between, okay? So, verb conjugation. Verb conjugation क्या होता है? I explained in my previous slides also that verb conjugation, verb is when you are doing any of the action. Let's say to eat, to sleep, to drink, to travel, to talk, to inform, to walk, to call. These all are verbs. ये सब क्या है? Verbs. सोना, उठना, जागना, बैठना, फोन करना, बोलना, चलना, दौड़ना. तो वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है वर्ब चेंजेस अ बिट थोड़ा सा चेंज होता है वर्ब एज पर द पर्सनल प्रोनाउन इज टू एस दी एस के अकॉर्डिंग और व्हेन द टेंस चेंजेस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस इट चेंजेस. What is irregular verb? Regular verbs we did in lesson plan 10, 11, and 12. If you have not seen that, please do watch these three lesson plans. Verbs are covered, explained by me. This is must to learn in A1 and A2. Okay. So irregular verb में क्या होता है everything remains like the regular verb. Same. No change. Just a slight change in do, as yes, and ear form. Okay. Or you can say do as yes and s form. Then we will do 10 and 10 formula that I will teach later. So right now you can say slight change in do, er, sie, es. You informal and he, she, it. For irregular verbs. That's it. और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ स्टैंडर्ड की तरह ही चलेगा जस्ट छोटा सा एक चेंज आएगा डू और एस में जो आपको करना है वो क्या चेंज होगा आई विल टेल यू. So, what I have done, I have commonly used irregular verbs. I have categorized in them in five categories. मैंने उनको क्या किया है इरेगुलर वर्ब्स को कि आपको अच्छे से समझ में आए फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट कैटेगरी एंड कैटेगरी नंबर 2. ओके. होमवर्क विल बी यू नीड टू लर्न दोज वर्ब्स. ठीक है लर्निंग करनी है उनको उनको लर्न करना अच्छे से. So let's move forward. So this is the verb conjugation for regular verbs, right? So irregular verbs like ish is e ending, do is st ending, right? We have done this. हम सबको पता है कौन सी एंडिंग कब लगती है. अब माइनर चेंज आएगा डू एंड एस डी एस फॉर्म में. अब क्या चेंज होगा लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज कैटेगरी नंबर 1. इन दिस आई हैव रिटन 5 वर्ब्स. सिर्फ 5 वर्ब्स हैं कैटेगरी 1 में जो आते हैं सिर्फ इन्हीं वर्ब्स के लिए है ये एक्सेप्शन रूल कैटेगरी. कौन से वर्ब्स हैं द वर्ब्स आर फहरन, त्रागन, schlafen, laufen, and fangen. These are written here on the top. So these verbs, a small change. Everything, first of all, will be the standard. Okay, let me just explain again.
Like ish mein we add the e ending. So it is ish fahara, which is same. Z faharan, en ending, which we always do. So same like regular verb. Then wear en ending. Same like regular verb formula. Wear ear ending, en ending. With ear we put t ending. So it will be fart and zz en ending. Same like regular verbs formula that I have taught. Same. Just two small changes. Now the rule states A is replace A with A umlaut, A with two dots. And which form changes? I told earlier. Do RZS form. Do and he, she, it. So we have replaced instead of writing FAHRST, हमने FAHRST लिखने की जगह क्या कर दिया? A को हमने A umlaut से रिप्लेस कर दिया. सेम हमने यहां पर किया है. बाकी एंडिंग डू में एस टी लगती है, एस डी एस में टी लगती है. वी विल राइट द सेम. Right? In do we write st ending, in SES we write the t ending. So it will remain the same. Only what we have done, we have replaced a with a umlaut. This is the formula or the rule for the category 1. What is the rule? A to replace a with a umlaut. Okay? In which forms? Only do RTS form. हम और कोई form touch नहीं करेंगे. We will conjugate them like always. Okay? So do first, RTS first. Please note it down. And now conjugate tragen, schlafen, laufen and fangen same way. The way I have done for fahren, you have to do for tragen, schlafen, laufen and fangen. Pause the video and do it. So मैंने green से highlight किया. I've highlighted with green also. Okay. You can see these you have to replace with a umlaut. ये वाली. A you will replace with a umlaut only in do and RZS form. Baki everything will remain standard. Do it. This you need to learn. A with a umlaut, five verbs are there, right? Fahren, tragen, schlafen, laufen, and fangen. This rule is applicable only to these five, not to anything else. ओके, ओनली दीज फाइव. ये रूल सिर्फ इन्हीं फाइव वर्ब्स के लिए है, सब में नहीं अप्लाई करेंगे. सिर्फ इन पांच वर्ब्स के लिए ए को हम ए उमलाउट से रिप्लेस करेंगे डू और एसजीएस फॉर्म में. ए उमलाउट मीन्स ए विद टू डॉट्स. ओके, आई एम एज्यूमिंग मैं ऐसा ले रही हूं कि आप लोगों ने पॉज कर लिया है वीडियो एंड नोट डाउन कर लिया है. सो आई एम मूविंग फर्दर. अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. दोज हु हैव नॉट डन इट, पॉज द वीडियो एंड डू इट फर्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो this is C, not E. Just a minute. Yes. So this is not A, this is C. Schlafen is the C point. So B is tragen. Tragen, ich trage. Du trägst, A को A umlaut से. Only the exception. Z is normal, Z tragen, en ending. Then SES में भी what do we do? Replace A with A umlaut.
Wir tragen, same standard, en ending, ihr tragt, same t ending, and sie tragen. So only this rule, a to replace by a with two dots, yeah, a umlaut is only applicable for do and SES. Baki, everything you have to do as the standard conjugation that you have done with me in lesson 10, 11, and 12. If you have not watched those videos, first do watch them. This is the next series. So before starting with chapter number 13, I request everybody to watch my lesson number 10, 11, and 12, where I have covered 30 verbs of regular verbs. Okay? Then you can understand this better. Now same thing, schlafen, 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 schlafen. Right, speaking is very important. To sleep. So, ich schlafe, same standard conjugation. Du schläfst, a umlaut. Because we will replace a with a umlaut in do form. And a umlaut again in SDS form also. Then standard conjugation, sie schlafen, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. T ending, en ending we have done in regular verbs. हमने regular verbs में किया है कि कैसे conjugate करते हैं एक regular verb को, right? So please note it down, cross check your answers if you have already done this with me in the prior slide. Cross check करेंगे सब अपने answers को अब. I hope it's correct. Now I'm moving forward. जिसका गलत होगा वो ये पॉज करेगा वीडियो एंड लिखेगा. आई एम गिविंग यू अ मिनट टू पॉज. ओके, नाउ मूव अहेड. D point. D is laufen. Laufen means to walk. Laufen, 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 and laufen. Very nice. So standard conjugation again. Ich laufe. Du laufst. Sie laufen. Es lauft. Wir laufen. Ihr lauft. And sie laufen. So in this also do läufst. Do is läufst. A umlaut. It is not laufst. Läufst. SES läuft. Läuft. Ich laufe. Du läufst. Sie laufen. Repeat after me. Keep speaking. SES läuft. Wir laufen. Ihr lauft. Sie laufen. If you are understanding what I am teaching, if you are able to understand these categories, finding it easy, then you can see a subscribe button on the top right? Please do click on it, subscribe to my channel, watch other relevant videos, you will get access. And you can see many other videos which are very, very helpful from A1 to B2. So please do subscribe to my channel now. So fangen to start. Ich fange, fangen. Fangen means to begin. Fange. It is not fangen. Fange, 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 fange. Ich fange, du fängst. Highlighted. A replaced by umlaut in only in do as es form, right? Sie fangen. SES fängt. Wir fangen.
Ihr fangt, sie fangen. I repeat, ich fange, du fängst, sie fangen, es fängt, wir fangen, ihr fangt, sie fangen. So this is the end of category 1. So what is the rule of category 1? Only applicable to 5 verbs. Fahren, tragen, schlafen, laufen and fangen. A to replace with a umlaut in do as the form. So category 1 हम कर रहे हैं. क्या रूल है इसका? ये रूल सिर्फ और सिर्फ इन 5 वर्ब्स के लिए ही यूज होगा. fahren, tragen, schlafen, laufen और fangen के लिए. रूल क्या है? डू एस फॉर्म यानी कि डू एंड ही शी इट वाली जो दो फॉर्म्स हैं इनमें हम ए को ए उमलाउट से यानी कि ए विद 2 डॉट्स जो आपको दिख रहा है यहां पर, इससे हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे. यानी कि ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? ए विद उमलाउट, ए विद 2 डॉट्स. खाली किस में? डू एस फॉर्म में. बाकी ऑल विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड यू हैव टू लर्न दैट एज होमवर्क. Learn it at home today. All these 5 verbs. Fine. So now I'm moving to category number 2. Every category has its own rule. But it ये आपको आसानी कर देगी इन verbs को याद करने के लिए. नहीं तो इतने सारे verbs आप याद नहीं कर पाओगे. अब you have learned just one rule. A replaced by a umlaut and that is applicable for 5 verbs. So 5 verbs are covered. यानी कि अभी हमने क्या किया है? सिर्फ एक रूल याद किया है कि ए को हमें ए उमलाउट से रिप्लेस करना है और आपने क्या करा है? 5 वर्ब्स याद कर लिए सिर्फ एक रूल से. ओके. नाउ कैटेगरी नंबर 2. व्हाट इज कैटेगरी नंबर 2? वी हैव 6 वर्ब्स. हमारे पास 6 वर्ब्स हैं कैटेगरी 2 में. फर्स्ट वर्ब इज प्रेशन, टू स्पीक. treffen, to meet. Vergessen. It is not vergessen. Ver. V is first sound. Vergessen. Geben. Essen. And helfen. Helfen. So what is the rule of this category? E replace I. यानी कि E को हमें क्या करना है? I से replace करना है. किस किस में? Do and as yes form. We have to replace E by I in do as yes form. So let's start. First, we will speak loudly. Speak with me with energy. Expression. 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 Very good. Expression. Expression. So, ich spreche in do. What is the exception? E को I से replace करना है. So, I will come instead of E. Z expression standard. Then in again E replace I in SES form. Then this is standard conjugation wir expression, ihr sprecht and Sie expression. So we will replace these E. See, I have highlighted these E. You need to replace. Do SES form में क्या करोगे? इस E की जगह पर हमें लिखना है I. So do that now. Pause the video and conjugate. ओके, आई एम होपिंग कि आपने पॉज कर लिया है एंड यू हैव डन इट बाय नाउ. यू आई होप आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव पॉज्ड माय वीडियो एंड कॉन्जुगेटेड. प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. If you want to learn German correctly and fast, please follow the instructions. Do not use any shortcut. अगर आपको जर्मन जल्दी और करेक्ट ग्रामर के साथ सीखना है, then please follow my instructions. It is not a waste of time. I know your time is precious.
Follow what I am saying. This way you will be able to learn German faster and correct way also. In a correct way also. Okay? Okay, so let's move further. Here we go. So in this, again, the second verb is treffen. To meet. Treffen. 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 So, ich standard treffe. Du triffst. Why? Du में ई को आई से रिप्लेस कर रहा है. Sie treffen. Sie es trifft. Wir treffen. Ihr trefft. Sie treffen. So do and RCS, what we did? E with I we replaced. Only in do RCS. प्लीज मेक श्योर आप सब में नहीं करेंगे ये चेंज. ओनली डू एंड एरजीएस में ये चेंज होगा एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली टू दिस कैटेगरी. आई एम सॉरी, इट इज कैटेगरी नंबर 2, not 1. Okay, and this is your rule. Point number C, vergessen. This is for sound, right? V is the for sound. Vergessen, for F in English. Vergessen, to forget, भूल जाना. Ich vergesse, du vergisst. Now double S is already written, so we cannot write 3S. डबल एस ऑलरेडी है सेंटेंस में, तो हम एक और एस नहीं लिखेंगे. So double ST. Please remember this spelling. Double ST. Vergisst. Z vergessen. Standard en ending हम ऐड करेंगे. Then SES again. Vergisst. Double S, not triple S. We are vergessen. We are vergesst. ZZ vergessen. Please note it down. Okay. So I'm moving ahead. So again, the verb is geben. Fourth verb is geben. Geben. Ich gebe. Du gibst. Ego, I say replace. Sie geben, standard conjugation, right? Everybody knows. If you don't know, watch my lesson 10, 11 and 12 for sure. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Okay. SN. In SN, we are replacing this first E, not the second E. We will replace this E. So ich esse, du isst. Instead of E, what we wrote? I. यानी कि E नहीं लिखेंगे हम क्या लिख रहे हैं उसकी जगह पे? I. Ist. Sie essen. Sie es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. One more time. Ich esse. Du isst. Sie essen. Sie es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. Now the last one. Let me quickly erase it, make neat and clean for you. I know it is very difficult to study now when
इट इज नॉट क्लियर. जब चीजें क्लियर नहीं होती, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी. So again, helfen is the verb. Helfen, helfen, helfen. Ich helfe, du hilfst, sie helfen, es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Note it down. So category 1, we will replace E को I से. Sorry, in category 1, we will replace A with A umlaut, 5 verbs. कौन से हैं वो 5 verbs? फाहरन, त्रागन, श्लाफन, फंगन. इन वर्ब्स को हमें क्या करना है? कैटेगरी 1 ए को ए umlaut से वी विल रिप्लेस इन डू एस यस फॉर्म. एंड कैटेगरी 2 sprechen, treffen, vergessen, essen and helfen. 6 verbs. Rule is do as yes form we will replace e with I, यानी कि e को I से replace करेंगे हम do as yes form में in category number 2. So with this we have done 11 verbs today also. Good achievement. You have to learn that although. So I would like to again thank you for watching my videos, giving all your support and love, and keep watching my informative material and videos. Anything that you have missed, I'm covering all of them. Each video is important. You can go to my channel and watch all those videos. And do not forget to subscribe. Take care till then. Bye bye.